हेलो बच्चों। तो अब इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स। ओके, जैसे हमने एक वीडियो में कैश क्रॉप्स डिस्कस किया था, वैसे ही इस वीडियो में जस्ट फॉर फूड क्रॉप्स वी हैव टू डिस्कस अ फ्यू एमसीक्यूज, okay, which are actually going to cover the entire portion of it. Okay, let's start with it. Question number 1: the state which is the largest producer of rice in India. Which is the state? Tamil Nadu, Maharashtra, West Bengal, and Punjab. Out of all these, West Bengal is the correct answer for this. Okay. Next question is characteristic feature which does not apply to the cultivation of rice. Number 1 is mechanization, plenty of sunshine, heavy rainfall and flooded fields, and number 4 is alluvial clay soil. Mechanization is not actually a characteristic feature for that. Okay, rest all are important for it. Clear? Next question: the most wasteful method of rice cultivation. जो सबसे ज्यादा wasteful है और जिससे production भी limited होता है, बहुत ही कम होता है. Number 1 is broadcasting method. Number 2 is dibbling method. Okay, number 3 is drilling method, and number 4 is transplantation method. Out of all these, broadcasting method is the most wasteful method of rice cultivation. Okay, then next is the method of rice cultivation which requires a lot of manual labor. अब इसमें number 1 है broadcasting, then dibbling, drilling, transplantation. इनमें से किस मेथड में सबसे ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड है? इसमें से जो सबसे सही ऑप्शन होगा बच्चों, ट्रांसप्लांटेशन. ओके, ट्रांसप्लांटेशन मेथड में पहले हम एक नर्सरी मेंटेन करते हैं, उसमें से जब थोड़े बड़े जब सीड्स हो जाते हैं, सीडलिंग्स हो जाते हैं, तो उनको निकाल के फिर से उनको लगाना पड़ता है. सोइंग इज डन इन अ प्रॉपर फील्ड विच इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पज. ओके, तो उसके लिए एक्चुअली वी नीड अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसप्लांटेशन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ राइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. नंबर 1 वेस्ट बंगाल, नंबर 2 इज महाराष्ट्र, नंबर 3 इज पंजाब, एंड देन तमिलनाडु. इसमें से करेक्ट आंसर होगा बच्चों तमिलनाडु. ओके, तमिलनाडु हैज गॉट द हाईएस्ट यील्ड पर हेक्टेयर. ओके, now next question is areas where rice is cultivated with the help of irrigation and have earned the distinction of being called the granary of India. Okay, granary, where the food grains are actually produced maximum, that area is known by the name granary of India. अब इसका आंसर अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा हो सकता है. फर्स्ट इज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी. नेक्स्ट इज कर्नाटका, बिहार, वेस्टर्न यूपी. थर्ड इज पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, एंड नेक्स्ट वन इज कर्नाटका, बिहार एंड पंजाब. इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस. ओके, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी. क्लियर? देन आफ्टर दिस नेक्स्ट इज डैश आइसो हाइट. राइट, अगर आप देखोगे आइसो हाइट लाइन जो होता है वो उसको बोलते, आइसो हाइट का मतलब होता है, जैसे आपने आइसो बार पढ़ा होगा, आपने आइसोथर्म पढ़ा होगा, इसी तरह से आइसो हाइट होता है, ISOHYET. आइसो हाइट होता है विच एक्चुअली which is an imaginary line again, just like isotherm and isobars and all. These lines actually join different places having same or equal amount of rainfall. Okay, और ये जो जो वेदर मैप्स हम यूज करते हैं उनमें आइसो हाइट्स जब शो करते हैं तो आइसो हाइट आर सिमिलर लाइंस एज द आइसोबार्स एंड ऑल, एंड दीज आर जॉइनिंग डिफरेंट प्लेसेस ऑफ which are receiving the same amount of rainfall. Okay, अब यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है. Dash isoheight line marks the boundary between wheat and rice growing areas. Okay, अब इसमें आप जब थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो यू विल गेट द आंसर फॉर इट. 100 centimeters isoheight line marks the boundary between wheat and rice growing areas. Okay, wheat growing areas are getting around 100 centimeters rainfall, but
जो राइस कल्टीवेशन एरियाज हैं वहां पर रेनफॉल जो है बहुत हायर चाहिए होता है, राइट? तो दिस इज एक्चुअली द लाइन विच मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द टू। क्लियर? नेक्स्ट है व्हीट इज अ डैश क्रॉप, खरीफ, रबी, जायद, okay, or you can say if both kharif and rabi, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा रबी। why rabi? Because rabi is actually the crop season in India which is during the winters we find that, right? मतलब पूरा जो ग्रोइंग पीरियड है उसका वो विंटर सीजन में होता है, और रबी सीजन में ही जो है वीट कल्टीवेशन होता है। क्योंकि बच्चों एक एक चीज आप याद रखना, वीट के लिए, वीट इज अ टेम्परेट क्रॉप, as we call rice as a tropical crop, because अभी ट्रॉपिकल क्रॉप अगर हम बोलेंगे तो ट्रॉपिकल क्रॉप मतलब इट नीड्स थ्रू आउट हाई टेम्परेचर, बट जब हम ये बोलते हैं कि वीट इज अ टेम्परेट क्रॉप मतलब इट नीड्स अ मॉडरेट टेम्परेचर रेंज, ओके? तो मॉडरेट टेम्परेचर मीन्स इट इज जनरली ग्रोन इन टेम्परेट जोन, ओके? तो इंडिया में कहां पर आपको वो कंडीशंस मिलेंगे? जनरली नदर्न प्लेन्स में, और कब? ड्यूरिंग द विंटर सीजन, बिकॉज नॉर्मली इट नीड्स लो टेम्परेचर, ओके? सो इन नदर्न प्लेन्स ऑल्सो ड्यूरिंग विंटर्स। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इट इज नॉट ग्रोन इन सदर्न इंडिया? Why wheat cultivation is rarely seen in southern India? Reason इसका यही होगा because there are no winters, no clear winters in southern India. Why we are concerned for winters? Because winter is the actual condition during which the wheat crop grows well in India, right? यही reason है northern India में wheat cultivation होता है, okay? And as a rabi crop. Clear? अच्छा, let's talk about the next one, the main wheat growing areas of India. अब इसमें देखो regions अलग अलग mentioned है along with the soil type, okay? Number 1 is black cotton soil areas of Madhya Pradesh. Number 2, black cotton soil area of Deccan Trap. Number 3 is flat, well drained alluvial plains of North India. And number 4 is coastal plains of India. इसमें बेस्ट ऑप्शन इसका होगा फ्लैट, वेल ड्रेन्ड alluvial plains of North India, especially the western part of it. Okay, that is the correct answer. Next है बच्चों, winter rains from the dash help in the early germination of wheat in northwest India. Winter rains from the dash, that means the reason behind it, which wind is responsible for it. Out of all these, you will have to take out the correct answer. Number 1 is southwest monsoon, number 2 is northeast monsoons, number 3 western disturbances, and number 4 is tropical cyclones. इसमें करेक्ट आंसर होगा बच्चों वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या टेम्परेट साइक्लोन्स, ओके, which cause rainfall during the winter season in northwestern parts of India, and that helps a lot in the early germination of wheat. Okay, for the wheat crop, it is very, very good. Acha, let's talk about the next question. Dash is the largest producer of wheat in India. Which of these states are the largest producers? Number 1 is Punjab, then Haryana, then Rajasthan, and UP. UP is the largest producer of wheat. Okay, next question. Dash is a measure of the Green Revolution, which caused an increase in the production of wheat in India. Number 1 is supply of HYV seeds or high yielding variety seeds. Number 2, use of chemical fertilizers and pesticides. Number 3, excellent irrigation facilities by a network of canals. And number 4 is all of the above. In this case, children, सारे के सारे ऑप्शंस जो यहाँ पर दिए हुए हैं सारे एप्लीकेबल है. दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय वीट प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीजें अप्लाई की गई थी इंडिया में, राइट? एंड दीज इंक्लूड सप्लाई ऑफ HYV सीड्स, ओके, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी यूज किए जा रहे थे, बहुत बड़े अमाउंट में जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, then excellent irrigation facilities by a network of canals, tube wells and all that is included within it. Okay, along with other things, these are the main you can say factors which were responsible for a successful green revolution in India. Okay, now next question. Dash serve as excellent forage and grain concentrates in cattle feed.
Number 1 is pulses, then next is vegetables, then millets and cereals. Pulses actually serve as excellent forage, right? Pulses is the correct answer. Then next, pulses are rotated with other crops because they are, what is the feature in the pulses which actually is important in crop rotation? Number 1 is they are leguminous. Number 2, they restore soil fertility. Number 3, they fix atmospheric nitrogen. And number 4 is all of the above. In this again, the option number 4, that is all of the above, will be correct. Because ये सारी चीजें यहाँ पर सही है. That is, pulses are leguminous crops. Okay, they restore soil fertility. They fix atmospheric nitrogen back in the soil. Okay, that's why these are taken as an important crop in crop rotation, right? Next question, pulses are the most widely cultivated area crops in India because they are, now in this, they are an important part of the diet of the Indian vegetarian population, number 1. Number 2, they add to the fertility of the soil. Number 3, both A and B. And the last option is none of the above. यहां पर बच्चों थर्ड ऑप्शन जो है सबसे सही है. दैट मीन्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट इन दिस, राइट? दैट इज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, राइट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अकाउंट्स फॉर नियरली 37% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया. दिस विल बी ग्राम्स. ओके, ग्राम. देन नेक्स्ट इज seeds are sown in June and the crops are harvested in the month of November in the dash season. इनमें से कौन सा सीजन, कौन सा क्रॉप सीजन इस दौरान आपको दिखेगा? जून में जिसकी सोइंग होती है, राइट? और हार्वेस्टिंग जो है इसका नवंबर में होता है. मतलब ड्यूरिंग द एंटायर, यस, मॉनसून सीजन. ओके, तो रबी इज अ विंटर क्रॉप. खरीफ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, तो खरीफ क्रॉप सीजन जो है वो इस ड्यूरेशन में ग्रो किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. टूरिज्म, इंडस्ट्रीज, एनिमल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द most important option out of all these. Okay, next question is, dash is both a problem and a characteristic feature of Indian agriculture. Preponderance of food crops. Number 2, dependence on the monsoons. Number 3, wide variety of crops. And number 4 is year-long growing season. इसमें सबसे appropriate जो answer होना चाहिए, that is actually dependence on the monsoons, right? To a great extent, still Indian agriculture is dependent on monsoons. Okay, so this is the correct answer for this. Now, next question. The Green Revolution has been most remarkable in the states of, number 1 option is Maharashtra, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Gujarat, Rajasthan, and Madhya Pradesh, and Punjab, Haryana, and Western UP. The answer will be the 4th option, that is Punjab, Haryana, and Western UP. Because we all know it very well, in the northern plains also, northwestern part, actually we can say, northwestern part of India, this Green Revolution was introduced. Okay, next question. In India, the average yield of crops is much lower as compared to the other countries due to, number 1, small and fragmented land holdings. Number 1. Number 2, lack of good quality seeds and proper use of manure and fertilizers. Then number 3 is erratic rainfall, floods, and droughts. And number 4 is all of the above. यहां पर बच्चों सारे 3 ऑप्शंस सही हैं. सारे ये कंडीशंस जो हैं इंडिया के केस में सही है, और इस वजह से जो 4th ऑप्शन है which mentions all of the above, that is the correct option for it. ओके, इंडिया में जो एवरेज यील्ड है क्रॉप्स का, ये काफी लो है, और इसका बड़ा रीजन ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं which are actually being faced by the Indian agriculture, these are responsible for this thing, right? For a low average yield of crops. Okay, acha, let's talk about the next one. Which method of agriculture is the odd one out? Okay, odd one out means shifting agriculture, plantation farming, extensive farming, and mixed farming. In what reference you can say out of all these, any one is odd one out, means you can say that
one particular crop is grown in all these, whether it is shifting agriculture, plantation farming, or extensive farming. But when we talk about the mixed farming, it actually includes more than one crop, right? It includes more than one crop, and moreover, it includes even the domestication of animals also within it. So all that is together taken as mixed farming. Even the poultry farming and all that comes under mixed farming. तो इनमें से कौन सा ऑड वन आउट हुआ? मिक्स्ड फार्मिंग. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीडोमिनेंट मेथड ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन, स्लैश एंड बर्न. इसमें से सबसे सही आंसर होगा बच्चों इंटेंसिव कल्टीवेशन. Okay, then rearing of animals and cultivation of crops is practiced simultaneously in mixed cropping. अभी just इससे पहले हम लोगों ने बात किया था, तो इसमें जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे कि मिक्स्ड फार्मिंग में स्पेशली ये सारी चीजें एक साथ की जाती हैं, साइड बाय साइड एक ही टाइम पे की जाती है. और वही क्वेश्चन अभी आपके सामने है. rearing of animals and cultivation of crops is practiced simultaneously in which of these? Number 1, mixed cropping. Number 2, mixed farming. Number 3, strip cropping. And number 4 is intensive farming. The correct answer is going to be mixed farming. Clear? Acha. Next is, dash is not a characteristic feature of plantation farming. Plantation farming का इनमें से कौन सा characteristic नहीं है? Right? Number 1, large estates. Then monoculture, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड हैवी कैपिटल आउटले. अब देखो बच्चों, इसमें से आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग, लार्ज स्टेट्स मतलब अ लार्ज एरिया इज कवर्ड अंडर दैट एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज डन. ओके, तो ये तो सही है. नंबर 2, मोनोकल्चर. मोनोकल्चर उसको बोलते हैं जहां पर सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है. ओके, वन पर्टिकुलर टाइप. लाइक अगर हम बात करें कॉफी कल्टीवेशन का, ओनली कॉफी विल बी कल्टिवेटेड इन द लार्ज एरिया. Right, entire state will have the coffee cultivation. अगर हम बोले रबर कल्टिवेशन, रबर स्टेट है, रबर स्टेट में ओनली रबर कल्टिवेशन विल बी डन. टी गार्डन्स है, टी स्टेट्स बोलते हैं उसको, वहां पर सिर्फ टी प्लांट्स आपको मिलेंगे, टी कल्टिवेशन मिलेगा. मतलब मोनोकल्चर, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन. ओके, नेक्स्ट है हेवी कैपिटल आउटले. मतलब पूरे प्रोडक्शन में पूरा जो फ्रॉम द बिगनिंग टिल द हार्वेस्ट इज डन एंड द एंटायर प्रोसेसिंग इज डन, राइट? तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैपिटल. ओके, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है. कौन सा इसमें जो है सही नहीं है? दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. मतलब एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करना, दैट इज रॉन्ग इन द केस ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग. ओके, so this is all with all these MCQs which I had to discuss in this video. So I hope that you are going to get anyhow, if you just go through all these questions, you will get benefited by this, no doubt, right? So again, in the next video, I'll come back with a new topic and the MCQs for that. Okay, so see you soon in the next video again. Until then, bye.